So understood, na compressor. So compressor you have to try. How to how to train your ear? Let us say you have problem with compressor. Take one sound, let's say kick, a snare, or a voice. Try different ratios, different plugins. You will be surprised to see that certain plugins like SSL gives you better compression than waves. Or Shadow Hill, if you try, it is better than SSL. Now I can tell you because I have tried it. Don't go on the name, don't go on the knobs which जिसमें इतना knob है. Best thing is to try that. Unless you try, to become a good engineer is always to experiment. Instead of wasting your time on WhatsApp and sending messages and खावो, सिगरेट खावो नहीं, उससे अच्छा है अकेला जब है बुकिंग कैंसिल हो गया है, always just open the file and try to do that. Same thing you can do with reverb, with same thing you can echo. You open any room, you open any plugin, how many parameters, oceans of parameters. On the contrary, in the plugin, the parameters are not available, which is not available in the hardware. If you open TC engine 6000, if you open Lexicon engine 960L, there are 60 parameters in one program. तो आदमी घबरा ही जाता है. But that only people expert, as they go more and more, they understand, they know which parameter can what bring what. So it is not written in the book. It may be echo wandering, spread image. That has no meaning, it's a word only, na? But unless you try it, okay, what is happening in the space, then you will understand that. And the other thing is, it is your liking, na? You want to put like this or you want to put like this. And the other thing is ratio, direct signal and reflected effect, how much you want to put. Who's going to decide that? Nobody is going to decide that. I can do parallel compression, by the way. You know parallel compression? I can bring, when the sound is going low, I can bring the original signal more. So I become more natural. So who is going to teach you? We can only tell you this is the way it is done, but how to do it, where to do, that you have to decide. अभी आप जाएंगे रेस्टोरेंट में, जाएंगे ना अच्छे रेस्टोरेंट में, अभी वो बोलेंगे क्या खाना खाने गए, चिकन कितनी वैरायटी का, बोलो 15 वैरायटी का, कौन सा खाने गए, है तो चिकन ही ना. दैट इज़ वाई आई ऑलवेज गिव एनालॉजी, साउंड रिकॉर्डिंग मिक्सिंग लाइक ए कुकिंग इज ए culinary art. At what stage what you do is more important. Now you are all famous for biryani, ना? वो क्या नाम है बिरयानी वाले का? असलम. हाँ, सबको मालूम है. उसमें ऐसा क्या है जो उसको ही आता है दूसरे को नहीं आता है? This he has experimented, na? And how to get taste, how much preheating, how many चिकन को क्या मसाले में मैरिनेट करने का है, चावल किस क्वालिटी का चाहिए, कैसे उसको बनाने का, किस ऑयल से चाहिए. फर्स्ट थिंग इज यू नीड ए बेटर चिकन क्वालिटी. नंबर 1, यू वांट ए गुड ऑयल, फ्रेश ऑयल. यू कोई नहीं 2 साल पुराना डाल दिया ऑयल. तीसरा जो मसाला है खुशबूदार होना चाहिए. पता लगा 3 साल का मसाला निकाल के डाला, कुछ होएगा उसमें? दैट इज ऑल कड़वा. वॉइस में दम नहीं है, बेसुरा गा रही है, तो बोलेगा ऑटो ट्यून से ठीक कर दूंगा ना. मैं बहुत बड़ा ड्रामेबाज में मेलो ड्रामा भी करूँगा. मेलो ड्रामा क्या है? मैं जानबूझ के बोलता हूँ ताकि वो ना सचेत रहे थोड़ा. ठीक है. नाउ यू डू इट. पता ऐसे लगा ऐसा है, तुझे देखा तो ये जहान सनम, ऐसा होएगा. These devices has been made कि एक सिंगर है, he cannot touch the note because of physical problem or the
she can't reach the note. So you help that note to be that she can sing. You know, that is the trick of this fellow, Rahman. वो वॉइस को खुद ट्यून करता है पहले. नहीं, कोई भी हो ना, कोई भी सिंगर हो तो थोड़ा बहुत इधर उधर फिसल जाता है ना. ऐसे तो नहीं ना परफेक्ट है. ह्यूमन वॉइस है ना, तो क्या करेगा, जो उसको एक्सप्रेशन अच्छा लगता है उसमें लगता है फ्लैट है, लेकिन उसको ठीक कर देता है. दैट इज़ वाई लता जी टोल्ड मी वन डे, ये लड़का बहुत ख़राब है. मैंने कहा क्या हुआ, कौन ख़राब है? ये रहमान बहुत ख़राब लड़का है. मैंने कहा दीदी क्या हुआ? कहते मैं गाना सुनती हूँ तो ऐसा लगता है मैंने गाया नहीं. मैं क्या ऐसे कैसे बोल रही है? सी दीज ऑल बिग सिंगर, जैसे पंडित जी हैं, व्हेन दे सिंग ना, दे स्टार्ट ए ग्राफ ऑफ सिंगिंग एंड दे ट्राई टू बिल्ड अप. हाउ वी मिक्स, व्हेन वी मिक्स ए सॉन्ग ना, हम क्या करो, 5 मिनट का गाना है तो उसमें बोलेंगे एंड के अंदर कोड़ा भी आएगा, हैं, कोरस भी आएगा, ड्रम भी आएगा, ये भी आएगा, वो पीछे वायलिन भी आ रही, चिको चुका चाहिए चुको चाहिए. अभी मालूम है ना सब आने वाला है. यू नो ना दिस थिंग, एलिमेंट्स यू आर रिकॉर्डेड. तो व्हाट यू आर डेवलपिंग इज, यू आर डेवलपिंग द मिक्स लाइक दैट. सो इन द एंड यू हैव सम कंट्रोल एंड एवरीथिंग इज क्लियर. तो वो क्या करता था लता जी के साथ, बस ऑन कर दिया टेप रिकॉर्डर और दबा दिया रिकॉर्ड, यार बस हो गया. तो वो क्या करता था, सिलेक्ट करके ना जो अच्छा पार्ट उसको लगता था ना, नॉट बिकॉज ऑफ लता जी, जो उसको अच्छा लगता वो लगा देने का. अच्छा जो थोड़ा उसको ठीक कर दिया. तो लता जी बोलते ऐसे तो गाना नहीं चाहिए गाना, क्योंकि गाने का ग्राफ होता है ना एक, तुम्हारे करियर का भी ग्राफ है ना. What you are today after 5 years will not be same. Na? You will be better engineer, right? After 10 years you will be better engineer. So in that case, what you are doing is basically you are growing in the field. Now today you have got so many plugin. पता लगा 10 साल के बाद साले इतने plugin आ गए. You are so confused. As it is, there are so many. अभी कौन सा इक्वलाइजर डालूँ भाई? 8 बैंड डालूँ, 10 बैंड डालूँ, 2 बैंड डालूँ, शेल्वे इक्वलाइजर डालूँ, इस कंपनी का डालूँ, उस कंपनी का डालूँ, इधर जाऊँ क्या उधर जाऊँ, समझ नहीं आता किधर जाऊँ. What I say, you master the best plugins which you think. Let us say you like Shadow Hills, you like 2-3 reverb. You choose that and master them. Suppose you are using convolution altiverb, let us say. I think you know altiverb, right? If you know that, altiverb basically is made for post-production, not for the music. Let me tell you that. अभी कोई बोलेगा नहीं, I can prove it to you. दूसरे प्रोग्राम जितने भी हैं, IR reverb ऐसे कुछ है ना, काफ़ी प्रोग्राम है ना, हैं? IR जैसे है ना, जैसे ऑक्सफोर्ड का है ना अपना, सोनी का. There are all these things there. So take 2-3 and study them perfectly. See the parameter, how changing this parameter. Listen, never think by looking at the visual thing will change. Whether it is changing here. Let me tell you one thing. Let us say you have been recording on analog mixer. वो जो है वो मिक्सर है, कोई साउंड क्राफ्ट है कौन सा है साउंड. लेट अस से यू आर डूइंग, एक बेस पे 2 dB बूस्ट किया, ठीक है. तो अभी डिजिटल मिक्सर में तुम गए उधर, इधर अपना प्लगइन में, उधर 100 Hz 2 dB किया, ये कुछ हुआ ही नहीं. उधर तो 2 dB किया तो इतना हो गया. दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी. You cannot do the same thing to get the same thing in the digital domain. Today, what is the fight in digital domain? How to get analog sound in the digital world. And people are doing it. It's not all big engineers, they are generating out good tracks, sound analog. The other thing I tell you is, when you do recording on the computer, the DAW, you mix with the plugin,
And after that, you say, oh, mastering bhi apne computer ke through. Wrong. When you want to do mastering, it has to pass out in the analog gears. That you cannot afford. So that means you have to send that track to the person who has got analog gear. Now there are 3-4 Maharathis. Bob Katz, who's a TC Electronic finalizer designer, he's still living, he does this thing. There are 360 degree in London. Sterling Sound, where Yashraj tracks are done in USA. Bob Clear Mountain. There are 5-6 engineers who are top. What they do is, they put kind of you have got a water, they put perfume, apple juice, apple flavor little. इस गाने में, इसमें pear flavor, इसमें rose flavor. This is what they do. Mastering doesn't mean I should change the sound. Mixing doesn't mean, this is very higher. Mixing doesn't mean I change your program. तुमने केक एक बड़ा फर्स्ट क्लास बनाया, भूम 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 ऐसा बनाया, उसको मैं बोल दिया पिकू पिकू ऐसा बना दिया. यू आर चेंजिंग, बेचारा जिसने प्रोग्राम किया है उसकी माँ की आँख कर रहे हो. दिस इज व्हाट मोस्ट ऑफ द मिक्सिंग इंजीनियर डू. वो क्या बोलते हैं, पागल है, इसको प्रोग्रामिंग करना नहीं आता है, मैं इसका रीप्रोग्राम करता हूँ. I disagree with that point. I have never done like this mixing. What element has been given to me, I just polish it. More bright, brilliance, everything is sitting in the right. Music is not only one kick, music is spectrum of sound. Song is spectrum, right? And how to get your the training done? Listen to the best Grammys. Get hold. मैं तो ये बोलता हूँ, आप 16 आदमी हो या 20 आदमी हो, एक एक सीडी खरीदो. Let us say he buys Michael Jackson, History. You buy, let us say, Sting. The third one buys some jazz. Fourth one buys some John McLaughlin. You buy original CD which is available on Amazon. You exchange with yourself. Make a copy and exchange yourself. So what is happening? You are investing one only, but you are circulating 20 people, 20 CDs. And you listen on a good system. See, if you don't listen at a proper resolution, then you can never grow. You are hearing, like today, my hearing is grown. Why? जब मुझे फालतू टाइम होता था ना, I used to brand new CD फड़ाक मारा सुनने का. ये कमाल है, ये साउंड ड्रम में जो रिवर्ब डाली ना, कड़क 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 फिर रिवर्ब आती है, बड़ा ज़बरदस्त है. ऐसा ट्राई करना चाहिए. You are imprinting that information to use somewhere else. On the contrary, I used to know when I was very tired and very, what do you call, late night काम किया, अगले दिन नया गाना है यश चोपड़ा का गाना है, तो आगे पहले एक नया सीडी सुनने का. फुट सीडी 15-20 मिनट आधा घंटा को. म्यूजिशियन तो आते आते लगता है वो खोलेंगे टाइप के पैकेट वैकेट खुलते रहेंगे ना. हाफ एन आवर यू आर ट्यूनिंग योर ईयर. दिस इज द साउंड यार, because listening uncompressed with a good speaker. Then what is happening? Your ear is now conditioned. Try to understand what I'm saying. When your ear is conditioned, your mind is set. Now when you are opening the fader only, so you are trying to get that kind of good sound in your ear. It may be tabla dholak, doesn't matter. Sound is sound. When the rim shot, it's a klak tabla, what does it make? Any other question? No? The concept of tape saturation. In the olden time when the analog technology was there, normally today we cannot go above zero. If you see the tape recorder made by Studer or Atari, there were only 2-3 companies to make. Basically,
Studer and Atari. And if you see in the tape record multi-track 24-track machine, they used to have VU meters. Now VU meter, why they used to be made? Because VU meter is related to the human ear. My human ear loudness is not because of the peak, it is because of the average volume. Because the loudness is gathered over a period of time. It is not instant you can make out it is loud. So it takes some time. Now I am not saying it 3 seconds it takes. It may take 300 milliseconds, 200 milliseconds. It's very quick. So I cannot measure it only, 200 milliseconds. Because there are 1,000, now this is tuck, tuck, this is 1 second. So in 1 second there are 1,000 cutting, na? So there are मैं बोल नहीं सकता मुँह से. So the thing is, tape saturation is what? If I overdrive a tape will never get distorted. Tape used to get kind of a thing, it used to get saturated. That same principle is applied in the compressor when you have a tube compressor.